Good morning, students. My name is VORA, Assistant Professor of Electrical Department at SHREE SWAMINARAYAN Institute of Technology. Start with the new chapters. Now we can see the last lectures. In the last lectures, we can see. So in the last lectures, we were see the earth fault protections and negative sequence voltage relay. So what is the earth fault? Generally, the earth fault protections is nothing but the attract the armature type relay unit is connected in each phase and current transformers of the motors. So this protection is also called the short circuit protections. The current transformer sends the motor current as well as the short circuit currents. So due to this, earth fault can cause the burnout of the coil and stamping, and hence the motor should be disconnected as quick as possible when the fault is occurs. The high speed tripping overcurrent relay are used to provide the earth fault protection. यानी कि अर्थ फॉल्ट में क्या होता है कि सेंसर होता है, जब इंटरनल टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि कोई भी रीज़न हो जाए, जैसे कि इंटरनल फॉल्ट हम कंसिडर करें कि फेस टू फेस फॉल्ट है या फेस टू अर्थ फॉल्ट है, इंटरटर्न्स फॉल्ट्स है, तो उसमें इंटरनल टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तब सेंसर सेंस करके सर्किट ब्रेकर को ओपन कर देगा एंड वो करंट रिले को डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी कि मिटिगेट कर देगा. So earth fault protection system, you can see the figures in the RYB. There are the three-phase systems is connected with the circuit breakers and the cable box. Then after connected of the SSIT, it means the core balance current transformers, and then after connected with the three-phase supply to the induction motor. Now the internal faults arise in the induction motor, यानी कि इंडक्शन मोटर के अंदर अगर इंटरनल फॉल्ट होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा. अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो कोर बैलेंस करंट ट्रांसफॉर्मर्स है वो अनबैलेंस हो जाएगा एंड द ओवर करंट रिले विल बी close the switch, and this switch is also energize the definite time relay coil, and this coil is also connected with the tripping coil, and trip coil is energized and the circuit breaker is open. So these are the basic constructions for the earth fault protection systems. Then after we can see the negative phase sequence voltage relay. So basically in the symmetrical components, the symmetrical components are nothing but and the mathematical modeling which is used to analysis the unbalanced three phase पावर सिस्टम एंड बोथ द नॉर्मल एंड अबनॉर्मल कंडीशंस. यानी कि नेगेटिव फेज सीक्वेंस की बात करें, जनरली ओरिजिनल सीक्वेंस इज कॉम्बिनेशंस ऑफ द थ्री डिफरेंट सीक्वेंस, द पॉजिटिव सीक्वेंस, negative sequence and zero sequence. You can see here, and the combinations is original systems. So these are the, you can see that the positive sequence is same as the the original system directions, but the negative sequence is opposite to the positive sequence, and the zero sequence is all the directions will be same. So what is the negative sequence? The concept of the negative sequence current is rooted in the symmetrical component methodology. The basic theory of the symmetrical component is that the phase current and the voltage in the three phase power system can be represented by the three single components. You can see the basic model of ABB for negative sequence relay. The negative sequence relay is, you can see the figures, the three phase system are connected with the circuit breakers, and the circuit breakers is connected with the induction motor. So then after the negative phase sequence voltage system, here you can see that the three phase system is connected with the circuit breakers, and these are is also connected with the induction motor. Now the individual phase are connected with the cities, and cities are connected with the negative relay. Now the negative sequence relay, negative sequence voltage relay is sense the continuous voltage of the systems. When the negative phase, it means that the one of the phase will be removed the system. At that time the negative phase sequence is sense the relay and they open the circuit breakers. So now then after we can see that the protection starts. The abnormal conditions, you can see here the overload conditions, you can use the overload relay, thermal relay. Then after the phase fault and earth fault, the HRC fuse and the differential protection. Under voltage, the protections is under voltage relay. Then after unbalanced voltage, negative phase sequence relay. Then single phasing is the thermal single phasing preventers, and then after the reverse phase sequence and use the protections is the phase reversal protection system. So in the last lecture we can see the topic. Now the today's topic is new chapter, numerical protection systems, and the today's topic is the introductions of numerical protections
then after block diagram of the numerical relay and the numerical overcurrent relay. So what is the numerical relay? The numerical protective relay is the protections relay that uses of the microcontroller to analysis of the power system for the voltage, current and other process quantities for the purpose of the detections of fault in the electrical power systems. So the numerical protections relay may also be called as the digital protective relay. यानी कि अभी तक हमने जो रिले स्टडी की है वो मैन्युअली थी, बट जब न्यूमेरिकल रिले की बात करते हैं तो वो माइक्रो प्रोसेसर थ्रू यूज होती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इज कॉल्ड द डिजिटल प्रोटेक्टिव रिले. सो एज द टेक्नोलॉजी डेवलप द प्रोटेक्शंस डिवाइस हैव ऑल्सो बी अंडरगॉन में चेंज फ्रॉम द नॉर्मल फ्यूज टू सर्किट ब्रेकर. हम जानते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, चेंज हुई है, तो फ्यूज से लेके सर्किट ब्रेकर तक बहुत कुछ चेंज हुआ है. So for the years we have using the static relay and the magnetic relay for the protections and the electrical network. Now when the microprocessors got the advanced, the protections device also got the involved. So numerical relay are based on the microprocessor, and the first numerical relay were released in the 1985. So electromagnetic and the static relay have the fixed wiring and setting is manually, but in the numerical relay on the other hand the programmable relay where the characteristic and the behaviors can be programmed, and the most numerical relay are also multifunctional. So numerical relay are involved for the static and the electromagnetic relay. There are basically a device used for measuring the electrical parameters in the electrical network and convert that into the numerical data which undergoes the mathematical and the logical analysis of decide ऑन रिडिंग द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स. यानी कि जो मैथमेटिकल मॉडल्स है जिसमें हमको एक्चुअली न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए न्यूमेरिकल रिले बहुत इंपॉर्टेंस रिले होती है. सो द सिंगल न्यूमेरिकल रिले कैन मॉनिटर द मल्टी पैरामीटर्स लाइक द करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, ऑन टाइम सेट, ऑफ सेट टाइम एंड एक्सेट्रा, एंड द सेम रिले कैन बी यूज फॉर द एनालाइजिंग एंड द मॉनिटरिंग द मल्टी फॉल्ट्स सच एज द ओवरकरंट रिले, ओवरफ्लक्सिंग, देन डिफरेंस करंट एंड मोर. सो numerical relay. Now study with the block diagram of the numerical relay. It means that how the numerical relay works. So the analog electrical signals from the power system can be obtained from the CTs and PTs. So here you can see that the main power systems to connected with the circuit breakers. So how the numerical relay works. So from the power systems, so in the power system which have to main our line, जहाँ से हमको ये जो प्रोटेक्शंस देना है उसकी बात करें तो कंटिन्यूसली सेंस करना पड़ता है. मेनली our system is work on the powers, and the power is divided into the voltage and current. So the voltage and current is continuously sensed, so we can use the analog signal from the power system and the sense the current and voltage using of the CTs and PTs. So the signal from the CTs and PTs are given to the low pass filter, and they removes the unwanted frequency component. So these are the given to the signal is analog signals conditioning. The signal from the signal conditioning circuits are sampled using the sample and hold circuit. The signal from the signal condition circuit are given to the analog multiplexer which accept more than one input and give the one output. So then after the sample and hold circuit, generally sample and hold circuits in our systems, हमारी जो सिस्टम है वो कंटिन्यूसली वोल्टेज एंड करंट चेंज करता है. इट मीन्स दी चेंजिंग दी पावर. सो अगर मुझे पर्टिकुलर टाइम पे कोई भी वैल्यू चेक करनी है तो उसको होल्ड करना पड़ता है, उसका सैंपल लेके होल्ड करना पड़ता है. तो वी कैन यूज दी सैंपल एंड होल्ड सर्किट्स. दिस सर्किट इज गिवन टू द एनालॉग मल्टीप्लेक्सर्स. सो एनालॉग मल्टीप्लेक्सर्स का मेन फंक्शंस क्या है? द नंबर ऑफ इनपुट बट गिवन दी वन आउटपुट. सो वो सिग्नल होगा एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल. अब जो भी सिग्नल्स आया है उसको आउटपुट करके एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करेगा. अब एनालॉग टू डिजिटल सर्किट में क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर को देगा और एंड ऑफ द कन्वर्जन सिग्नल्स. सो माइक्रो प्रोसेसर्स में कंटिन्यूसली वो सिग्नल्स देगा किस किस को? द स्टार्ट ऑफ द कन्वर्जन सिग्नल्स फॉर द analog to digital, then after the signal for the MPU,
एंड द सिग्नल फॉर द एम्पियर। सो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है तो वो 3 ब्लॉक को कंट्रोल करेगा, द सैंपल एंड होल्ड सर्किट, देन आफ्टर द एनालॉग मल्टीप्लेक्सर्स एंड एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल्स, देन आफ्टर दे हैव डिसाइड टू दी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, वापिस से एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, और अगर फॉल्ट होगा तो सिग्नल फॉर द tripping signal given to the circuit figures. So these are the basic block diagram of the numerical relay. So this is the very important functions for the numerical relay. Now the advantages of the numerical relay. So basically the economy and the good performance, हमने जैसे देखा कि माइक्रो प्रोसेसर जनरली हमारी जो मेन सिस्टम है, जैसे कि यहाँ पे इकोनॉमिक एंड गुड परफॉर्मेंस, अच्छा परफॉर्मेंस तो देगी क्योंकि वो डायरेक्टली सेंस करती है, बट इकोनॉमिकली चीज़ है बिकॉज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज़ दी वेरी हाई वैल्यूज़। बट हम जनरली हमारी सिस्टम में अलग अलग फॉल्ट के लिए अलग अलग रिले यूज़ करते हैं, जैसे कि वोल्टेज फ्लक्सिंग है, देन ओवर वोल्टेज है, अंडर वोल्टेज है, तो सबके लिए जो अलग अलग रिले यूज़ करते हैं वो सभी रिले का अलग अलग काम सिर्फ ये न्यूमेरिकल रिले करता है। सो इट इज़ वेरी इफेक्टिवली implementations and the good performance. Now dependability and the security. So there are the not the dependability and very easy to security. इसमें हम लॉक सिस्टम रख सकते हैं क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर है, डिजिटल थ्रू है, इसलिए। नाउ द लैक्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड सिंप्लिसिटी, यानी कि इसमें पूरी तरह से हमको मैन्युअली हम एक बार उसको सेटिंग कर दे कि ओवर करंट किस लिमिट में करना है, अंडर करंट किस तरीके करना है। सो उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है और सिंप्लिसिटी है। एंड द हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी यानी कि अगर हम नॉर्मल रिले की बात करें तो अगर उसको ऑपरेट होने में सपोज के 0.2 या 0.3 सेकंड लगता है तो ये विथिन अ सेकंड में रिप्लाई देना रिएक्ट कर सकता है। देन आप द मल्टी फंक्शनल कैपेबिलिटी, जैसे मैंने आगे बताया कि मल्टी फंक्शंस कैपेबिलिटी है उसमें, जैसे कि अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लेक्सर यूज़ किया है कि अलग अलग से हम इनपुट लेके आउटपुट कैपेबिलिटी है। एंड आफ्टर द पावर सिस्टम मेजरमेंट अवेबिलिटी, यानी कि पावर सिस्टम में जितने भी मेजरमेंट कंपोनेंट्स है, पैरामीटर्स है, वो उसमें हम मेजर कर सकते हैं। सो दिस आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ द न्यूमेरिकल रिले। नाउ द टाइप्स ऑफ द न्यूमेरिकल रिले। सो जनरली देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल रिले, पावर सिस्टम प्रोटेक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। सो पावर सिस्टम की बात अगर मैं करता हूँ, अगर मैं पावर सिस्टम प्रोटेक्शंस की बात करता हूँ, सो डिस्टेंस प्रोटेक्शंस रिले है, देन आफ्टर द लाइन डिफरेंशियल्स प्रोटेक्शंस है, देन ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शंस है, लो एम्पीडेंस बस बार प्रोटेक्शंस है, हाई एम्पीडेंस प्रोटेक्शंस है, एंड देन आफ्टर दिस आर द कंसिडर पैरा रिले और प्रोटेक्शंस फॉर द पावर सिस्टम प्रोटेक्शंस। नाउ अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोटेक्शंस की बात करता हूँ, सो ओवर करंट प्रोटेक्शंस, देन आफ्टर अंडर वोल्टेज और अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शंस, देन आफ्टर डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शंस एंड फीडर मैनेजमेंट मैनेजर रिले, यानी कि जो फीडर्स होता है उसकी मैनेजर के रिले। सो दीज आर दी कंसिडर्स फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल रिले। नाउ टॉक अबाउट द ओवर करंट प्रोटेक्शन सिस्टम। So basically in the electrical power system, the overcurrent or excessive current is the situations where the larger than intended electrical current exit through the conductor, leading to excessive generator of heat and the risk of the fire or damage to the equipment. हम जानते हैं कि ओवर करंट प्रोटेक्शन सिस्टम जनरली इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में जब लोड ज़्यादा हो जाए मोटर की कैपेसिटी से, या तो इनिशियल लेवल में जो जनरेटर होता है वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है यानी कि हीट जनरेट करता है, तो उसकी वजह से हमको क्या पता है कि फायर भी हो सकता है और कई बार वाइंडिंग डैमेज भी हो सकता है और डैमेज इक्विपमेंट भी हो सकता है। सो हियर द बेसिक ट्रिपिंग सर्किट फॉर द ओवर करंट रिले, तो यहाँ पे बस बार सिस्टम थ्रू सर्किट ब्रेकर होता है और सर्किट ब्रेकर कनेक्शंस विद द सिटीज। नाउ सिटीज इज कंटिन्यूसली सेंस द करंट। अब जब ओवर करंट प्रोटेक्शन सिस्टम हो जाएगी, यानी कि जो एक्सेसिव जो मेन एक्चुअल करंट है उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो सिटी इज सेंस द करंट एंड द cities are operate the relay coil, and this relay coil is connected with the plungers, and the plunger is close the circuit, and through the tripping coil is energized through the batteries, and the circuit breaker is open. So these are the basic protections for the overcurrent relay. Now we can see the numerical overcurrent protections relay. So in the discussions in the earlier, we can see that the basic block diagram of the numerical relays are the same as the numerical overcurrent relay. Here we can find the
the overcurrent voltage, so that here only we can use these CTs. So these are our main system is connected with the circuit breakers. Here the current signal is sensed and the using of the CTs. Now the sense the CTs is also converted into analog signal conditioning, and then after sample and hold circuits to sampling the circuits, then after the analog multiplexers, this signal is change the analog to digital, and the microprocessor unit is used to take a decisions. If the fault is occurs, it means the overcurrent is occur. At that time, the digital convert is signals for the digital to analog converter and given to the circuit breaker to treat the circuits. So these are the basic block diagram of the basic not the numerical overcurrent relay protection systems. So today's your topic is numerical relays for the basic block diagram and as well as the numerical overcurrent relay systems. So here you can see that the first question your worksheet questions why numerical relay is different from the other relays, and the other two questions that discuss the block diagram of numerical relay and write the short note on the microprocessor overcurrent relay. These two questions are assignment questions. If any query regarding this topic, you can contact me, and if any question regarding this topic, you can mail me. My mail ID and the phone number is in your screen. Thank you.